और दोस्तों, जिससा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक यंग जो है वो इमर्जिंग एक्सपर्ट है मिडल ईस्ट पे, रहमा सदीका। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में जो रिसर्च फेलो हैं, और इनका बहुत सारा काम जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर है। अरहमा, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो अरहमा, पहले तो मैं चाहता हूं कि आज आपसे बात की जाए पाकिस्तान और मिडल ईस्ट और इंडिया फैक्टर क्या है इसमें। आप ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान मिडल ईस्ट पॉलिसी नॉर्मली। तो जो हम सुनते आ रहे हैं वो यही है कि हम जाते हैं वहाँ से पैसे लेके आ जाते हैं, एंड दैट्स दीज आर द रिलेशंस। और पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के जो ताल्लुकात हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन रेमिटेंस दैट कम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट। बट हाउ वुड यू, अगर मैं जनरली आपको कहूँ कि एक्सप्लेन करें पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड के जो ताल्लुकात हैं, इसमें प्राइमरली सऊदी अरब है और जो जीसीसी बेसिकली इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकियों को तो हम अरब वर्ल्ड का हिस्सा ही नहीं समझते। सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान मिडल ईस्ट रिलेशंस? So first of all, thank you so much for having me on your show. अच्छा, so Pakistan's policy towards the Middle East काफ़ी अरसे से ये रही है कि Pakistan has always been trying to portray itself as the sole nuclear power in the Middle East, in the Muslim world, sorry. And it has projected that for so long that it has not tapped into the economic niches of the Middle East. Remittances, जैसे आपने कहा, since 1970s oil boom, uh, a lot of migrants from South Asia primarily, they went to the Middle East. So for Pakistan, like other South Asian countries, remittances make up a primary part of their secondary budget. So in Pakistan's case, it's 86%, जिसमें से 60% is from the Gulf countries, primarily Saudi Arabia, UAE, and Qatar. So remittances has and will always continue to play an important part where Pakistan-Middle East relations are concerned. Another important dimension is, of course, religious tourism, especially in Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia. I can't forget that. So that has also been one aspect जो पिछली government has been trying. Imran Khan की government has tried to work a lot on it, that to promote religious tourism between Pakistan and the Middle East countries. Pakistan has not tapped into the economic dimension of the Middle East, but since ये national security policy जो हमारी पिछले साल लॉन्च हुई है, तो पाकिस्तान ने अपनी पिवट ही बदल दी है। अब पाकिस्तान आ गया है जो इकोनॉमिक्स की तरह, which is late, which is quite late in comparison to India, for example. And in that regard, we saw Shah Mahmood Qureshi went on a whole Middle East trip. Iran, Turkey, he went to Egypt, Iraq even. And you saw a lot of economic outreach pay emphasis. Similar is the case with the present dispensation in Pakistan. They have been trying to create sustainable economic inroads. Like Pakistan, yes, we go to these countries, as aapne mentioned, that we go to them for aid primarily. But aid can only get you so far, right? Aid cannot be constituted as economic success. In this regard, Pakistan has been leveraging CPEC a lot because the Gulf countries have all said that they would like to invest in the special economic zones of CPEC, especially in terms of food security investment. So Pakistan has been leveraging that. With regards to Turkey also, हमने देखा कि शहबाज शरीफ went to Turkey in June, July 2022. And there he said, afterwards he said that Pakistan, Turkey and China can make CPEC a trilateral arrangement between them. So so the government, present and the previous one, also have been leveraging CPEC and trying to create sustainable economic linkages with all the Middle East countries, especially the Gulf countries. और एक और चीज़ जो आपने mention किया, so
one shortcoming जो पाकिस्तान में रही है government में, that they have always looked only at Qatar and Saudi Arabia and the UAE in terms of the Gulf countries or countries with which they should have sustainable linkages. They have not looked at Bahrain, Kuwait, and Oman. And Oman being our closest Arab neighbor, and Oman having its own vision as all other Gulf countries, Vision 2040, Pakistan can still tap into Oman Vision 2040. अगर आप गवादर, बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि अगर आप गवादर की शोर पे खड़े हो आपको लाइट्स नज़र आएंगी ओमान में, इतना करीब है ओमान हमसे. And more than half the population in Oman has its roots in Balochistan. लेकिन अगर आप देखा जाए तो India has more of a presence in Oman compared to Pakistan. In August 2022, an Oman company, a railway company, it proposed to the government that it would want to build a sort of connection between Oman and Gwadar. Maybe link it up to CPEC also. But because of the chaotic situation back in Pakistan, they have not said much about that agreement as yet. So for Pakistan, we need to follow up on this. Also, with regards to special economic zones, हमारा एक मसला होता है कि जैसे सऊदी अरेबिया ने 2019 में भी इसका विजिट हुआ था. They proposed that we would set up an oil refinery in Gwadar. Did not even say गवादर, हमने उनको कहा गवादर. कितने साल, 3 साल हो गए हैं. We have not been able to identify location. अगर छोटी कंपनी भी पाकिस्तान में सेट करनी हो, we require at least 2 years of NOCs और बहुत लंबा प्रोसेस होता है. So we have created a very hostile environment for our own domestic investors. So how can we expect foreign investors to come in and invest? बिल्कुल. So yeah, so first we have to all of these Gulf countries, they have their own visions. Pakistan की labor force जो है ना, it is redundant now. It is not, it is very substandard अब. अगर देखा जाए उनके visions को, they don't need people जैसे हम ऑफर कर रहे हैं. They need people who can work in construction, who have the technical know-how in engineering, in with their in line with their vision. India has done that, Bangladesh has done that, Sri Lanka, Nepal have already are training their workers in line with these visions. हम लोगों ने research ही नहीं की. So when you look at 2030 visions, Qatar की and Saudi Arabia की and Abu Dhabi economic vision 2030, we are काफ़ी पीछे हो गए हम अपनी बाकी South Asian countries से. But with Oman, I think we still have a very good chance because of geographical proximity and also because maybe we don't have 8 years with the other visions, but at least with Oman we have 18 years to tap into their vision. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपके बाकियों के विजन 2030 एंड उसमें हमारे पास टाइम कोई नहीं है. सो एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट हमारा सारा वो रिडंडेंट हो गया. सो द थिंग इज राइट नाउ कि इंडिया जो है वो जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है. वो प्रेसिडेंट सीसी को बुलाते हैं ऑन देयर जो से कहते हैं ना वो परेड के लिए बुला रहे हैं जनवरी में. ठीक है जी. हम लोग जो हैं व्हाई डू यू बिलीव, व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके? इसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज थे, कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस ठीक नहीं हुई, हाइब्रिड रजीम है. क्यों हम उस तरह मिडल ईस्ट को टैप इन नहीं कर सके? या आप ये समझती हैं कि हम मिडल ईस्टर्न ममालिक को सिर्फ कश्मीर के लेंस ही देखते रहे हैं कि हमें इनकी ज़रूरत है कि जब इंडिया के खिलाफ महाज खड़ा करना हो तो चलो इनको साथ ले आओ, और बाकी टाइम जो है वो आप उधर देखते रहो फॉर एड सपोर्ट और अपने जो है वो एक अनस्किल्ड लेबर भेजने के लिए. अदर देन दैट हमने उनको सीरियस नहीं लिया. डू यू थिंक दैट कि हम
दिस इज अ चैलेंज। और ये हम जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि इंडिया जो है दैट इज गेटिंग क्लोजर विद द यूएई ऑन ITU $200 बिलियन बायलैटरल ट्रेड। तो जरा इस पे बताया कि हम कहाँ खराब हो गए और इंडिया कहाँ से जो है वो मिडिल ईस्ट के करीब आ गया। अब तो उन्होंने दे चेंज द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पोजीशन ऑन कश्मीर एज वेल। सो व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन शुरू से, एंड ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि एक तो हम लोगों ने हमेशा, हम किसी भी बायलैटरल ट्रिप पे जाते रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो हमने हमेशा उनको सबसे पहले आते ही कश्मीर इशू। देखें, बात यह है कि कश्मीर इज़ आवर प्रॉब्लम एंड nobody will help us fight it. So we can't expect, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं गल्फ कंट्री से, दे हैव नॉट बिन रियलिस्टिक. वी कांट एक्सपेक्ट them or anyone else to fight with us for Kashmir. It's our issue, we have to fight it on our own. दूसरी बात यह है कि इंडिया हैज़ एवर सिंस मोदी हैज़ कम इन, मोर ज़्यादा मोदी कैंडिडेट हुआ है कि इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है सही तरीके से. इफ़ यू लुक एट आवर एम्बेसीज, पाकिस्तान इंडियन एम्बेसीज, पाकिस्तानी एम्बेसीज अब जाके प्रोएक्टिव हुई हैं. इंडियन एम्बेसीज have been very proactive. They've been showcasing the Indian culture, yoga culture. पूरा दुबई में देखते हैं हर जगह योगा उन्होंने प्रमोट किया हुआ है. ठीक है, सो दे हैव, एंड ऑल्सो सबसे ज़रूरी बात, these countries take India seriously because India is considered a regional economic heavyweight. Pakistan is an economic lightweight. उसको कोई सीरियस नहीं लेता. पाकिस्तान को देखते हैं, वो समझते हैं या तो ये कश्मीर के लिए आया है या पाकिस्तान हमसे लोन्स लेने आया है. हम लोग को कैपेसिटी, पाकिस्तान में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव नॉट लेवरेज दैट to the best extent. फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं, पाकिस्तान को देखते हैं तो लोन्स नज़र आते हैं सिर्फ. सो फॉर देम वी आर अ बर्डन. India for them is a rising star. It's a potential. It's a regional economic heavyweight, and especially after the COVID pandemic, economics is at the forefront of all the countries. And please keep in mind that these countries have, इनका विजन्स का यही मकसद है that they are trying to stave off oil dependence, and India offers that market both इनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए पर आउटवर्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी. बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंडिया जो है वो ऑफर कर रहा है. अभी रिसेंटली हम ये बताइएगा कि इंडिया सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है. और एक तो MBS का विजिट पाकिस्तान तो था ही था, लेकिन वो इंडिया भी आ रहे थे और वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की हुई थी उसको मॉनिटर करने आ रहे थे. दूसरा, इंडियन मिलिट्री इज गेटिंग क्लोजर विद द सऊदीज. तो वेयर डू यू थिंक हमारे लिए क्या चैलेंज है, ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको याद हो कि आई थिंक फॉर्मर जनरल नरवाने जो थे ही विजिटेड सऊदी अरेबिया, और अभी भी इंडियन सऊदी मिलिट्री लीडरशिप भी इंडिया आई. और अगर आपको याद हो कि उन्होंने वो 1971 की तस्वीर के सामने बैठ के वो तस्वीर साइन किया. सो हाउ डू यू सी इंडिया सऊदी अरब रिलेशंस पर्टिकुलरली, जो कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. और अब आप क्या समझती हैं कि अब हर अरब मुल्क जो है वो हमें फोर्स कर रहा है या हमें मैसेजिंग कर रहा है कि भाई आप हमें इंडियन लेंस से देखना बंद करें. इंडिया के साथ हमारा अपना ताल्लुक है, आपका इंडिया के साथ अपना ताल्लुक है, और हमारा और आपका अपना ताल्लुक है. सो इंडिया सऊदी अरब ताल्लुकात को कैसे देखती हैं, और जो पाकिस्तान नॉर्मली सऊदी अरब को देखता था कि वी आर देयर सिक्योरिटी प्रोवाइडर. सो वेयर डू वी स्टैंड देयर. एंड सुना कि इंडिया भी ऑफर कर रहा है कि हमारे मुसलमान फौजी भी बेशक जो है सऊदीज को चाहिए, तो वी आर अबाउट टू गिव देम, और दे सकते हैं उनको. जी. सो MBS का जो विजिट था वो, अगर 2019 को देखा जाए, सो MBS जब भी इस रीजन में विजिट करेगा, ही विल ऑलवेज विजिट पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर. ही वॉन्ट decouple them. He will always visit both countries करना पड़ेगा, because they also have to somewhere have a balancing act with Pakistan and India. मसला है कि पाकिस्तान को बहुत पहले
pardon my French, but shut up call दे दी थी बहुत सब गल्फ कंट्रीज ने कि कश्मीर इज़ योर बायलैटरल इशू. इट्स वही पाकिस्तान ने अपने ही खुद ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली थी गल्फ कंट्री से, अनरियलिस्टिक. उन्होंने तो पहले कहते थे आपका बायलैटरल मामला है, आप खुद ही हल करो, वी विल नॉट इंटरफेयर इन दिस. एंड व्हाई वुड यू इंटरफेयर जब आपका इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में? व्हाई वुड यू वांट इंडिया टू बी अगेंस्ट यू ऑन एनी फ्रंट? Militarily wise, Pakistan again is still going on the 1982 agreement with Saudi Arabia. That is still in place. Militarily, if you look at it, yes, they will. There has been a significant leaning towards the Indian military. और जो आपने रेफर किया था इवेंट, वही सारा कुछ हुआ है. लेकिन आई डोंट थिंक ज़्यादा इंग्रेस एटलीस्ट ज़्यादा आपको ऑब्वियस इंग्रेस नज़र नहीं आएगा इंडियन मिलिट्री का इन द गल्फ कंट्रीज. देयर इट इज़ ऑलरेडी देयर इज़ नो डिनाइंग दैट देयर इज़. एंड स्पेशली ये हुआ है कि जो GCC कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ का रप्रोचमा हुआ इसराइल के साथ, and because India and Israel already have a nexus. So as you can see with I2U2B, you have UAE, US, Israel, and India, right? So that nexus has played into the already existing nexus between India and Israel. So that factor has also gone into India's favor as well, militarily wise, investment wise as well. But I think at the baseline of it is economics at the end. India is a heavyweight in economic terms. There is no denying that. And every country अपना फ़ायदा देखे कि उन सबको इंडिया में ही फ़ायदा नज़र आ रहा है. So unless we get our domestic house in order first, it all boils down to this. We need to get our domestic house in order, order first. All the political parties में हमारी कंट्री में मसला है कि everyone has their own vested interests. So even if you look at the Gulf countries, they don't want to invest in Pakistan at the moment. Qatar does not. They're like, we're ready to do deals with you. We're ready to talk investment with you. But until and unless peace and semblance and this chaotic situation does not dispel, हम लोग आपके मुल्क में नहीं आएंगे. So another reason for MPS not coming, and he will not come. No country, no leader would want to come in a country जहाँ इतनी chaos हो. इस्लामाबाद में containers ही containers हो हर जगह. So why would any leader would want to come to such a chaotic situation? So, how do you see? What are the options for Pakistan? Way forward क्या है to engage with the Middle Eastern countries, Saudi Arab, UAE? ये वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान को they are taking us non-serious and they are getting closer with the India. जैसे आपने भी कहा, even the Indians were smart enough to get Middle Eastern countries in an occupied Kashmir for the investment के लिए भी लेके आ गए. तो आप क्या समझते हैं? Way forward क्या है? हाउस इन ऑर्डर करें, कैपेसिटी बढ़ाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सीरियस लें, like what do you think, because you have been writing, talking and speaking on this? Yes. So for Pakistan basically सबसे पहले फ्रंट एंड फॉरमोस्ट पे है कि अपना हाउस एंड ऑर्डर करें. इन्वेस्टर्स के लिए आप एक नॉन हॉस्टाइल एक सिचुएशन बनाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए. आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको देख के वो भी कंफर्टेबल होंगे, वो आएंगे. यू हैव CPEC विद यू, फॉलो अप ऑन द एग्रीमेंट्स. ठीक है, आप MOUs तो साइन कर लेते हैं लेकिन आप फॉलो अप नहीं करते. सो यू नीड टू लेवरेज CPEC टू द बेस्ट एक्सटेंट you can. You have CPEC, India does not have that leverage. So use the leverage which you have. Tap into all the countries. With Oman, for example, you have a comparative advantage in poultry. So why don't you leverage that with energy security? Why don't you use comparative advantage with that? Oman जो है वो I think more than 60-70% अपनी import करता है poultry. So why do they have to turn to India?
Why can't they turn to you? You're closer to them उस तरह. उनका भी फायदा आपको ही फायदा. ठीक. Also, what another thing which Pakistan has done is it has tried to play the card of being facilitator between Saudi Arabia and Iran for so long. Iran and Saudi Arabia don't need you. um, they they don't need you, and especially at the time when you were saying कि हम mediate करेंगे, they were never ready to come to the table for negotiations. अभी इराक और जॉर्डन facilitate कर रहे हैं, लेकिन to an extent वो जाते हैं. आप for the longest time कश्मीर या ईरान एंड सऊदी अरब पे concentrate कर रहे थे, अपने economic niches बनाते. So अभी मौका है कि train your workers. You need to train your workforce. You need to give them relative comparative advantage as opposed to all the other workers from South Asia. Workers की कमी नहीं है उन countries को, but they need specific people in line with their visions. Then create investor-friendly environment in your country. Play up with, collaborate on in climate change, for example. Previous government ke under, yes, there were talks of collaborating with Saudi Arabia where climate change was concerned. Do that with all the Gulf countries because these countries are also going through climate change. जो आप लोग अब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को COP27 में देख लिए. So leverage that. Leverage special economic zones and train your workers. But first of all, you need to put your domestic house in order. Everyone needs to be on the same page. बिल्कुल सही कह रही हैं कि डोमेस्टिक हाउस ऑर्डर करने की ज़रूरत है, और अगर आपको और मुझ जैसे जो है लोगों को पता है और आम बंदे को भी पता है, तो सियासतदानों को क्यों नहीं पता? पता सबको है, लेकिन आई एम श्योर कि शायद कोई वाइजर सेंस विल प्रिवेल एट सम टाइम. थैंक यू वेरी मच अरहमा फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान मिडिल ईस्टर्न रिलेशंस एंड विज़-वी इंडिया. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. Thank you.